स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ रिलेटेड विद द मैक्सिमम पावर थ्योरम। सो हमारा जो न्यूमेरिकल है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल, द मैक्सिमम पावर, द मैक्सिमम power in the circuit shown in figure, the maximum power in the circuit shown in figure through the load is now आपके ऑप्शन है 25 वाट, नेक्स्ट ऑप्शन जो है आपका वो है 30.6 वाट एंड लास्ट ऑप्शन जो है आपका वो है 62.5 वाट एंड द लास्ट ऑप्शन इज 110 watt and the diagram is 50 angle 0 degree, it is tan. Then we have the inductor of 20 ohm, then we have a load resistance which is completely variable, it is ZL and it is variable. So let's see the answer of this question. So the again we are, देखिए मैंने पहले बताया था जो AC की प्रॉब्लम है वहां प्रूफ की जरूरत नहीं है, वहां सिर्फ आपको जो पढ़ाया गया है या जो आपको रूल्स बताए गए हैं या फॉर्मूले दिखाए गए हैं उनको बहुत अच्छे से आपको समझना है और वो कैसे अप्लाई होने हैं वो हम लोग करवा देंगे आपसे कि कैसे अप्लाई करने हैं, बट आप उसको फॉर्मूलों को याद रखिएगा। सो देखिए ये जनरल केस है और जनरल केस में ये ध्यान रखना, जनरल केस में क्या होगा, ZL ऐसा ही मार्क होगा जिससे आपको पहचानने में दिक्कत ना हो। तो स्टार्ट करते हैं इसको। फर्स्ट आई विल सी द ZL. So ZL is what? ZL is ZTH complex conjugate and we will have 10 plus J20. ओके, सो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ले लेते हैं इसका। तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट में आपको पता ही है रियल पार्ट एज इट इज रहेगा, इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव हो जाएगा, सो इट इज -10। ओके, सो यहां पर मैं पावर को आपको दो तरीके से निकालने की कोशिश करूंगा जिससे कि आपको दोनों चीजें क्लियर रहें। सो अब अगर आपका लोड की बात करें तो लोड आ गया आपका 10 - J20, ठीक है यहां तक। सो फर्स्ट मेथड हम लोग सॉल्व करते हैं पावर को कैलकुलेट करने का। अब मैंने आपको बताया था ये आपका सोर्स है एंड दिस सोर्स इज डिलीवरिंग टू टाइप्स ऑफ पावर। ये जो सोर्स है ये दो तरीके की पावर दे रहा है आपको, एक तो P और एक Q। तो P जो है वो इसके द्वारा कंज्यूम की जाएगी और इसके द्वारा कंज्यूम की जाएगी। वो कैसे होती है मैं आपको बताऊंगा, AC जैसे ही स्टार्ट हो जाएगी। फिर जो Q है वो इसके द्वारा कंज्यूम की जाएगी। So active power is consumed by the resistive element and the reactive power is consumed by the inductor and reactive power is delivered by the capacitor. We will see how it is in the AC. So यहाँ तक बात समझ में आ गई है। अब मैं कैलकुलेशन जो है दो पार्ट्स में करना चाहता हूँ, दो पार्ट का मतलब दो मेथड से करना चाह रहा हूँ। देखते हैं मेथड नंबर 1 टू कैलकुलेट द पावर। सो पावर देखते हैं हम। अब देखते हैं हम जो पहला फॉर्मूला पढ़ा था दैट इज फॉर्मूला बेस्ड। सो अगर आपको याद हो PL बराबर लिखा था मैंने VTH²/4RL, बट कीप इन माइंड ये अब जो है अब सारी कैलकुलेशन होगी AC में। सो दिस शुड बी योर RMS वैल्यू, दिस शुड बी इन योर RMS वैल्यू, ठीक है यहां तक, अदरवाइज क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। सो अगर मैं बात करूं तो VTH इज व्हाट, VTH इज 50, दैट इज 50 × 50 × 50 and what is your RL? RL is 10 ohm. If you compare this value with ZL then ZL is what? Your ZL is this now, ZL equals to RL plus JXL. So if you compare this value then your RL is this and XL is this. So we have RL is 10 ohm. So 10 ohm. Okay. So if you see it is 5. So it is 250 divided by 4. So 250 divided by 4 that is 125 by 2 and 125 half of 125 is how much? I think it is 62.5. So let's confirm it is half of 100 is 50 and half of 25 is 12.5. Yeah, it is 62.5 watt.
सो योर ऑप्शन शुड बी सी। यहां तक क्लियर है बात? सो यहां तक अगर आप देखें तो ऑप्शन आ गया आपका सी ना। अब अगर मैं दूसरे तरीके से इसकी कैलकुलेशन करूं, क्योंकि डिफरेंट बुक्स वगैरह अगर आप फॉलो करेंगे तो बार बार कहेंगे सर देखिए यहाँ कैलकुलेशन ऐसे की है वहां, तो जनरल जो केस होता है वहां फॉर्मूले भी वैलिड होते हैं और P = I² फॉर्मूला भी वैलिड रहता है। तो देखते हैं कैलकुलेशन नंबर 2। यहाँ मेथड 1 था, अब मेथड 2 में देखते हैं कैलकुलेशन करके। अगर मैं सर्किट की बात करूं तो जो टोटल करंट होगी दैट इज IL = VTH अपॉन ZTH प्लस ZL, यही होगी। सो अगर मैं ZTH की बात करूं तो ZTH कितना हुआ 50 है हमारा, और ZTH कितना था 10 + J20। सिमिलरली जो ZL था वो कितना था 10 - J20, तो 20 से 20 कैंसिल आउट, सो इट इज 50 / 20 and 50 / 20 is 5/2. Okay. Now, what is the power in AC? Power in AC is PL = IL² RMS into R, because the active power is only consumed by the load resistance. So IL is what? 5/2, that is 25/4. Similarly, the RL is what? RL is how much? It is 10. Okay, so it is 250/4. 250/4. See the result. This is 250/4 and 250/4. So the meaning is that if you are having the general case, then you can apply either the formula that is VTH² upon 4RL to calculate the power, or you have the formula or the basic concept, the power just P = I²R, और I कैसे निकालेंगे वो आपको पता है। So अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ विद रिस्पेक्ट टू द जनरल केस। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं, पहले इसको इरेज कर लेते हैं। सो हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो है देखते हैं क्या है। सो सी द नेक्स्ट रिजल्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए लाउड स्पीकर। Next question for the maximum power theorem is a loud speaker, it is LOUD, loud speaker is connected across terminals A and B of the network shown in figure. Okay, what should be its impedance? What should be its impedance? What should be the impedance B? What should be its impedance B to obtain maximum power dissipation in it. So we have the diagram. Let's draw the diagram here. It is 10 angle 0 degree. Then we have 3 plus J4 ohm. Then we have a capacitor of value minus J5 ohm, and here we have load. Now ऑप्शन क्या है देख लेते हैं। तो ऑप्शन है हमारे, पहला ऑप्शन जो है वो है 3 minus J1 ohm, एंड बी ऑप्शन जो है हमारा है 3 plus J9, एंड सी ऑप्शन जो है हमारा है 7.5 plus J2.5. Similarly, we have 7.5 minus J2.5. So these are option that is given in your question. So start करते हैं हम अपनी next प्रॉब्लम।
सो अब ये ध्यान रखिए इस प्रॉब्लम में क्या है, लाउड स्पीकर यहाँ पर जो है कि लाउड स्पीकर कनेक्टेड है across the terminal AB, like a loudspeaker is this. This is a loudspeaker. Okay, you are enjoying your song. Okay. So this is your loudspeaker. Okay, so a loudspeaker is connected across the terminal AB of the network shown in figure. What should be the impedance to obtain the maximum power? Now meaning क्या रहा है, इस लोड जो आपका स्पीकर लगा है इसका लोड इंपीडेंस ZL है. So to have the maximum power or to have the maximum sound in this speaker, what should be the impedance of this speaker? So आपको पता ही है, to have maximum power in speaker. So ZTH is complex conjugate of Z. तो मीनिंग है अगर आप ज्यादा एंजॉय करना चाहते हैं और इस स्पीकर से ज्यादा सॉन्ग अच्छा सुनना चाहते हैं with large bass, then your ZL, the impedance of your speaker should be equals to the complex conjugate of that internal impedance of the source. ठीक है. तो अब अगर हम याद करें, हमने जो ZTH है या RTH निकालते समय अगर आपको याद हो, वोल्टेज सोर्स शॉर्ट एंड करंट सोर्स open. So this is the problem of calculating the ZTH exactly first. So हम ZTH calculate करते हैं. तो while calculating ZTH also, voltage source short circuited, current source open circuited. Agree? So apply करते हैं इसको. देखिए शॉर्ट कर देते हैं इसको. ये रहा आपका 3 plus J4. Here 3 plus J4 means the resistance is 3 and inductor is J4. Similarly, the capacitor is J4 minus of J5. Sorry. Now at this point you have to calculate your impedance. So we will start calculating the impedance at this point. So यहाँ से हम लोग start करते हैं. So अगर मैं यहाँ से start करता हूँ तो देखते हैं, this is let Z1. It is Z1 and that this is Z2. So both are in parallel. So for the parallel we have the formula ZTH equals to Z1 Z2 upon Z1 plus Z2. So apply करते हैं इस formula को. So we have 3 plus J4 into minus J5 and we have in the denominator 3 plus J4 minus J5. So just solve it. I will solve the question here. Let's it. We will erase this thing now. So हम लोग यहाँ पे solve करते हैं इसको. So I will first multiply minus J5 with 3 plus J4. So I'm multiplying. So it is minus J15. Okay. Then J square value is -1 and -1 is already, so it is plus 20 plus J20. Now how much is in the denominator? 3 minus J2. 3 minus J2. Okay. Sorry, it is 1. Minus 1 because it is 4, it is 5. So it is J1. Okay. So I will just set it, clear it. So it is 20. Yeah, it is 2 and it is minus. Okay. So let's make it real versus imaginary. 20 minus J15 divided by 3 minus J. Okay. So we will have again the complex theory. So अब क्या करें हम, अब करते हैं कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको ठीक करने के लिए. सो इट इज 3 plus J एंड इट इज 3 plus J. अगर आपको याद हो ये कैसे करते थे, अगर नहीं पता है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, हम ऐसे ही सब कुछ कवर करेंगे ही. ठीक है. सो इट इज 20 minus J15. I think it is 20. First I will confirm. It is 15. Yeah, and it is 20. Yeah, बिल्कुल करेक्ट है. minus J15 एंड प्लस 20. ठीक है. ना अब अगर मैं इसको अभी गुणा करूंगा इससे, और अगर मैं इसकी बात करूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दैट इज ए स्क्वायर और बी स्क्वायर. अगर आपको याद हो ए प्लस जे बी, और अगर ए माइनस जे बी की गुणा करेंगे हम तो आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ठीक है. सो फ्रॉम दैट वी विल हैव दिस. सो ए स्क्वायर इज व्हाट 9 and 9 square 3 square 9 and 9 plus 10, so it is 10. Okay. So we will also erase the bottom part now.
सो अगर हम बात करें फिर इसकी मल्टीप्लाई कर लें अपर साइड में, सो इट इज 20, इट इज 60, ओके, देन इट इज माइनस J45। अब इससे हमने मल्टीप्लाई कर लिया, अब इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इट इज J20, देन इट इज J स्क्वायर माइनस इज ऑलरेडी, सो इट इज 15 एंड डिवाइड बाय हाउ मच 10। सो कंबाइन कर लेते हैं, रियल और इमेजिनरी को एक तरफ कर लेते हैं, इट इज व्हाट 75 एंड इट इज हाउ मच 60, सॉरी इट इज 45 माइनस का है और 20 प्लस का है, सो इट इज माइनस 25 and divide by 10. So if you divide by 10, it is 7.5 and it is J25. So it is your ZTH now. It comes to ZTH. Now what we have to find? You have to find the load impedance. So load impedance is what? ZL is equals to ZTH complex conjugate. So complex conjugate करते हैं 7.5 plus J2.5. चेक करते हैं कोई ऑप्शन अवेलेबल है या नहीं है. Yes, we have option. अब ये ध्यान रखिएगा, आप जल्दबाजी में ये मत कर जाइए, दोनों ऑप्शन अवेलेबल है 7.5 माइनस J2.5 एंड 7.5 प्लस J2.5, बट आपको लेना था क्या? कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट. इस चीज का ध्यान रखिएगा कि हमें कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेना चाहिए, तो ये हमारा आंसर निकल गया. ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर देखें तो एसी में थोड़ी सी प्रॉब्लम क्या है, एसी में आपको जो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं या जो फेजर है उनके रूल बहुत अच्छे से आने चाहिए. जैसे यहाँ देख रहे हैं कैलकुलेशन ज्यादा होगी, अगर ये न्यूमेरिकल की बात करें तो इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा होगी, बट इन जनरल जो न्यूमेरिकल आता है वो इजी आता है जिससे हमारी कैलकुलेशन हो जाए. सो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल. देखते हैं क्या है हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम अपनी मैक्सिमम पावर थ्योरम इन एसी के लिए. ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज if an impedance ZL is connected across a voltage source, if an impedance ZL is connected across a voltage source V with source impedance ZS, then for maximum power transfer, then for maximum power transfer to the load the load impedance must be equal to, so our first option is source impedance ZS, and the next option is complex conjugate of ZS, Then we have the C option, and what is that? Real part of ZS, and last option is D option is imaginary part of ZS, So let's see what are the options. Now, if an impedance ZL is connected across a voltage source with a source impedance of Z, then for maximum power the load impedance with, so it is just based on your proof. So let's draw. It is your V source, it is your V volt source which is having a series impedance of ZS, and at the load we have a load impedance ZL,
Agree? So it is ZL which is varying. Okay. So what should be the load impedance? It is simple. So ZL should be equals to ZTH. Sorry, ZS. यहाँ पर ZS है इस बार. So ZS complex conjugate, that is equals to RS minus JXS is the value. तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट. So it's a simple problem that is asked. Now moving to the next question. क्या है हमारी next problem? देखते हैं. So we will see the next problem, that is with respect to DC source. Sorry, with respect to AC. Now next question जो है हमारा है. Now next question, in the figure the value of in the figure the value of load resistor R, in the figure the value of load resistor R for which in the figure the value of load resistor R for which, sorry, for which नहीं, it is just which maximize the power, delivered to its is. So let's take the options, and our options are, the first option जो है हमारा है 14.14 ओम. नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है हमारा 10 ओम. सी ऑप्शन जो है वो है हमारा 200 ओम, एंड द लास्ट ऑप्शन इज 28.28 ओम, एंड द फिगर इज, it is Emax cos 10t. Then we have 10 ohm, and then 1H. Then we have RL. Okay, so we have RL. Now this is our question. Let's see what will be the solution of this question. Now if you remember, this is a problem related with AC, but you are having only the resistive load, so it is the restricted case condition in which we have the third part. So we have third part, that is, if you see the ZL is RL plus J0, and here RL is variable. Now so if you remember, for the restricted condition third part, our RL is equals to mod of ZTH, if you remember, and then formula is RTH ka square plus XTH ka square. Now one problem is there. Here the resistance is in ohm, but the inductance value is in Henry, but it should be in ohm, but it should be in ohm. So how we can convert the Henry into ohm? So we have XL equals to omega L, and omega is 2 pi FL. So what is omega? If you compare this general sinusoidal equation, voltage equation, with standard equation, that is Em cos omega t, then how much is your omega? Omega is 10. So it is 10, and L is how much? 1. So it is 10 ohm. But if you represent the inductor exactly in AC, then it is JXL, that is equals to J10 ohm. So it is our value of inductor in ohm. So let's compute the RL. So it is RTH is how much? 10, that is 10 square,
And how much is your xth? That is also 10. 10 ka square. So it is 100 plus 100. That is root 200. So we will take, like, I can write 200 as 2 into 100. So 10 comes out. And what is the value of root? Root value is 1.414. If you multiply 10 by 1.414, it is 14.14 ohm. So is there any option available? Yes, we have the option number A. So it is the problem that is based on restricted condition. Okay, so let's move to the next question. So moving to the next question, देखते हैं क्या है हमारे next problem. So next question है, a source of angular frequency, a source of angular frequency 1 radian per second, 1 radian per second, a source of 1 radian per second has a source impedance consisting of 1 ohm resistance, in series with 1H, that is 1 Henry inductance. The load that will obtain the maximum power transfer is, now your first option is 1 ohm resistance, and our next option is 1 ohm resistance in parallel with 1H inductor. And next option is C, that is 1 ohm resistance in series with 1F capacitor. And the next option is the D, that is 1 ohm resistance in parallel with 1F capacitor. So this is about the question, and their options are these. So let's start the question. So a source of angular frequency 1 radian per second. So I'm having solution की अगर बात करें हम, एक सोर्स है,
AC source, and AC source is represented by BT equals to Vm sin ओमेगा टी और cos ओमेगा टी, ठीक है। सो उस सोर्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, 1 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है यहाँ तक। देन आगे, ए सोर्स ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी 1 रेडियन पर सेकेंड हैज ए सोर्स इंपीडेंस, सोर्स जो है दैट इज हैविंग रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम, ओके, and how much is the inductance? Yeah, 1 Henry. So it is 1 H, and L is what, 1 H. Then the load that will obtain the maximum power transfer is, so we have to connect what load so that we have the maximum power at the load. So we will see the problem. So if you see the problem, it is just based on the theory, that is ZL is equals to ZTH complex conjugate. But problem क्या है, ये जो है हर बार ZTH को कुछ ना कुछ अलग अलग डिफरेंट रूप में दे रहा है, वही हमें डिफरेंट टाइप पकड़ने हैं। सो वी हैव RTH माइनस JXTH, ठीक है यहाँ तक। So first what we have to do, the resistance is in ohm but inductor is in Henry, so we have to convert the inductor into ohm. So let's convert this inductor into first ohm. So if you see the representation of inductor is JXL, that is J omega L, where omega is how much, 1, so it is J into 1, and how much is L, that is also 1, so it is J